Good morning, everyone. It's so good to see parents taking out time and joining us. As you all know, this session is for our grade students who will be giving the board exams. So I would not take much of your time. I'll hand over the session to Shalini ma'am. So good morning, a very warm welcome to you all to be present here. We are now gearing up for the board exams, which are starting in another couple of days. And I think it's very important, my message to the parents, that how do we prepare our child for the board exam? What exactly we can do? There is a lot of stress on the child. The children are stressed out completely. And I think at this moment, we all as teachers, as parents, as educators, need to come together and help and support the children so that they perform. I very strongly believe that nothing in this world is impossible. I mean, if I talk about myself, I was not a very bright student till grade 10th, but in 11th, because there was some mentors I got who motivated me, my parents supported me, and I think I did very well in 12th. So it is important how we speak. So I've just created a little PPT, and I would like to share it with you all. Just give me a minute. I just want you, when you look at your children, that are you going to hire your son or daughter? Do you think you will hire your child who's there with you if you're running a company or if you're working in an organization? Because I think it's important for you to, every time you look at a child, think about it, that when you're hiring, what are the things you're looking for? You're looking for the skills. You're looking for, of course, knowledge with skills. If the answer is no, then if you're not going to hire your child, you have to think that what are the attitude, what are the skills required for success. Now, parent has a very important role, especially during the board exams, along with the educator, that how we can help a child. I, in my 30 years of career, have seen around maybe 60% children during this time who go through a lot of mental trauma. Because इतना pressure हम डालते हैं बच्चे पे कि वो बच्चा actually instead of revising and working, be calm, he gets paranoid. So as a parent, I think because I think it's just 4-5 days left for the exam to start. You all want your child to succeed. So what can you do? What is very important for the child to know that my parents are there for me. It actually is like a magic. अगर मुझे पता हो कि मेरे लिए कोई take care करने के लिए कोई है, I will be extremely like happy, I'll be more calm, I'll be more relaxed, I'll be more patient. So I think it's very important. Now, help them at this time because 15th, they start their exams, whether the child is in 10th or 12th. What is important as a parent is help them manage their time. एक बच्चा 12 घंटे नहीं पढ़ सकता. You have to allow them, because even a human brain, 20-30 minutes ke baad we get tired and we need a 2 minutes break or a 5-minute break. So help them, because children are very young. Unko nahi samajh aata ki hum apna time kaise manage kare. They get paranoid, they get nervous. I've seen children who start, their palms start sweating. पसीना आने लग जाता है उनके हाथों में. बहुत सारी चीजें होती हैं. And this stage is very important as a parent कि आप उनको कैसे support करें. And मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप उनको अब support करिए, उनको demotivate मत करिए. उनको ये बोलने का वो जो टाइम था अब वो चला गया है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, क्या करोगे, फेल हो जाओगे. Now it is not the time, it's only 5 days. Now you need to motivate them, give them that strength that I know you can do it. आप कर सकते हो, आप बैठो, आप कर सकते हो, उसकी help करिए, but let them manage their time. Be there for the child, because this is a very important moment. एक simple सी चीज होती है अपने बच्चे को examination center जाके छोड़ना, लेने आना. It really works magic. Children feel so happy with that. तो वो छोटी सी चीज, I know we are all working, important चीजें हो सकती हैं, but I think being there for your child is like magic.
क्योंकि अब जो हमने पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, जो बच्चों ने पढ़ना था पढ़ लिया. नाउ इज द टाइम टू मोटिवेट देम सो दैट दे डू देयर बेस्ट. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर बच्चे में काबिलियत होती है अच्छा करने की. कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो डीमोटिवेट होते हैं. पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है, कई बार स्कूल का प्रेशर हो जाता है. एंड माय टीचर्स आर आल्सो देयर एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट टू बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स कि अब मौका है, हम जहां उनकी जितनी मदद हो सकती है करें, उनको सपोर्ट दें. यूजिंग द राइट वर्ड्स. अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं कि आपका तो फ्यूचर, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आई विश आई कुड शो यू माय पोस्ट, मैंने उसमें लिखा है कि हम आपके साथ हैं, आप हार्ड वर्क करिए, पर ये मार्क्स आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करेंगे. ये मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू मस्ट डू वेल इन दीज एग्जाम्स टू गेट इनटू द राइट कॉलेज. पर योर लाइफ इज, इट्स वेरी डिफरेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारा तो फ्यूचर ही इन एग्जाम पे डिपेंडेंट है, इफ यू वांट टू डू वेल इन लाइफ यू मस्ट डू वेल. वो बच्चा कहीं पे नर्वस हो जाता है एंड दे गेट, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स बिकॉज वो बोल नहीं पाते हैं आपसे, क्योंकि हम सुनते नहीं है. वी डोंट लिसन टू आवर चिल्ड्रन, दैट्स अ फैक्ट. वी ओनली टॉक. So what happens is the children get. कल मेरे कमरे में एक बच्चा आया था जिसकी परफॉर्मेंस एकेडमिकली, मैं देखो एकेडमिकली इज डिफरेंट, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, बहुत लो है. मैंने उससे, आई स्पोक टू हिम फॉर हाफ एन आवर. मैंने कहा बेटे आप कर सकते हो एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ यू. कहता मैम करके दिखाऊंगा मैं. एंड आई सेड सो व्हाट्स द टारगेट. अब उसने बोला 90%. ये नहीं कि उसने हवा में बोला. ही सेड मैं 90 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है 80 तो मेरे आ जाएंगे क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. Children, if they know that आप उन पे विश्वास करते हैं, आप उनको बिलीव करते हैं, they will do what you want them to do. So I think it's very important. Monitor their progress and help them create self-help aids. बहुत important है कि थोड़ा सा आप उनसे conversation पे रहिए. इस समय बच्चे के mind पे बहुत तरह तरह की चीजें जाती हैं. You know, sometimes he's paranoid, sometimes he's scared, sometimes he's nervous. What they do is they start calling up their friends. और friends के साथ वो अपना, they want to relax. But what is important is आप as a parent, बेटे कितना हो गया, कितना बचता है, कैसे कर रहे हो, मेरे को पता है, आप कर सकते हो. आपके ये छोटे छोटे शब्द बहुत इम्पैक्ट करते हैं बच्चों पे एंड दे फील वेरी मोटिवेटेड एंड दे फील वेरी हैप्पी. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे का प्रोग्रेस मॉनिटर करिए. रिमूव डिस्ट्रैक्शंस. अब क्या है कि पेरेंट्स अपने आप तो फोन पे बैठे हैं और बच्चे को हम बोल रहे हैं फोन मत यूज करो, तो वो तो बच्चा वही करेगा जो वो देख रहा है. ये टाइम है कि आपका भी एग्जाम है. आई थिंक आपको भी होना चाहिए, जैसे आप डिनर टाइम है, डिनर टाइम पे मोबाइल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जहां पे आप बच्चे से एज अ फैमिली आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, उसको वो टाइम बता सकते हैं कि व्हेन यू वर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम, सो दैट ही गेट्स मोटिवेटेड, ही गेट्स कनेक्टेड विद यू. जितने भी बच्चों पे हार्वर्ड में रिसर्च हुई थी, जो बच्चे अच्छा एकेडमिकली नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, जब उनसे पूछा गया था तो मेजर वन फैक्टर था, बिकॉज आपको ये याद रखना है दिस इज एन एडोलेसेंट एज, दे आर ऑलमोस्ट 17, some are 16 and a half, some are 18. At this time they are in a rebel mode. तो जब बहुत उन्होंने बोला, इतना प्रेशर था कि हमें पढ़ना ही नहीं है. तो what is important is कि pressure has to be also at the right way. अगर आप प्रेशर कुकर को भी ज्यादा देर गैस पे रखेंगे वो भी बर्स्ट हो जाता है. तो बच्चों को बहुत हमें संभाल के whatever we are saying, so remove distractions. अगर वो बच्चा टीवी देखना चाहता है ना, आपको पता है कि उसने नहीं पढ़ा है आज, तो आपको पोलाइटली बोलना पड़ेगा, तो why don't you see for 15-20 minutes and then please go back and study. उसको ये अपॉर्चुनिटी अगर देंगे और उससे समझाएंगे, सब बच्चे समझते हैं जब हम प्यार से बोलते हैं. प्यार की भाषा एक्चुअली एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, इवन एन एडल्ट. लिसन टू देम. हम सुनते नहीं है, हम खाली उनको ज्ञान देते हैं, हम खाली उनको बोलना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू लिसन टू देम कि उनके मन में क्या है, क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही हैं. कई बारी अभी मॉर्निंग में आई टुक अ सेशन विद द टीचर्स और मेरा वही था कि बच्चों से मैं पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एक स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी नो व्हाट इट इज. अब पेरेंट्स क्या होता है, 7th 8th 9th में बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं. समटाइम्स जो ये नया कॉन्सेप्ट है, आई एम माई चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड, कोई भी पेरेंट बच्चे का फ्रेंड नहीं होता है. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कोई भी टीचर बच्चे का फ्रेंड नहीं बन सकता. इट्स अ वेरी फाइन लाइन. कुछ ना कुछ चीज बच्चा आपको नहीं बताएगा क्योंकि आप उसके पेरेंट हैं.
So you have to remember, you have to behave like a parent. एक timeline set करनी पड़ेगी और जो आप बोल रहे हैं बच्चा should follow. अगर आप बोल रहे हैं कि चलो 15 मिनट आप टीवी देख सकते हैं तो after 15 remind him politely, respect say that okay, I think आपने बोला था 15 मिनट, now time is over, please go back and study. But it is very important to support them, to help them at this time. And this is my request to parents. Monitor and identify any warning signs. हम अभी बच्चा 17-18 का है और बहुत चीजें, नई चीजें ट्राई करता है, बहुत चीजें होती हैं. लास्ट ईयर 2 बच्चे चीटिंग करते हुए CBSE सेंटर में पकड़े गए. वो तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा था प्रिंसिपल के साथ कि हमारे को उसने बच्चे पे एक्शन नहीं लिया. आई विल शो यू व्हाट इज द रूल. आपको अपने बच्चे को अभी लास्ट टाइम जब आपके मॉक एग्जाम हुए थे या कौन से PT हुए थे एग्जाम्स प्री बोर्ड, उसमें भी आई थिंक प्रिया, चेतना, आई कांट सी, वी गॉट 2 चिल्ड्रन. अगर आपको बुलाया गया है, यू आर अ पेरेंट, बच्चे को समझाइए. एक छोटी सी गलती कई बारी जिंदगी में बहुत भारी पड़ती है. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड दैट. क्योंकि मैं आपके घर नहीं आ सकती, अगर आप कहेंगे मैं आ जाऊंगी, बट बच्चे को इस समय समझाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको कुछ लग रहा है, वार्निंग साइंस दिख रहे हैं, if he's sitting alone for long, if he's talking to somebody for long, please notice what is happening. Talk to your child. As a parent, हम बच्चे से बात नहीं करते. The biggest problem is we don't talk to our children. We actually just tell them. हम खाली बताते हैं, हम बात नहीं करते. जो talking होता है, it is like maybe like a badminton match. एक बंदा इधर से फेंकता है, वो उधर से फेंकता है. We have to talk to our children. And when we talk, we will know what are the warning signs. कुछ गलत तो नहीं वो कर रहा है या प्लान कर रहा है गलत. आप अगर देखेंगे गूगल में जाके, बच्चे नई नई चीजें निकाल रहे हैं for cheating. And cheating is such a big धब्बा on your character कि वो जिंदगी भर आपके forehead पे लग जाता है. So it's very important that you talk to your children. देखिए उसकी कंपनी क्या है. कई बार बच्चा सही होता है बट उसका पीयर प्रेशर से वो चीजें गलत करते हैं. एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट आप प्लीज उसको मॉनिटर करिए. I've already told you, don't put too much pressure on the students, because वो प्रेशर से मैं आपको, कुछ लोगों को मैंने दिखाया होगा वीडियो, कुछ को नहीं दिखाया होगा, but I think I would like to show you this video, which is very important to me. It's very close to my heart, and I think just let me see the video. Just 1 minute, please. Just give me a minute. Let me put the video on the top. I want you to see this because this is very, very important. अगर आपने देखा भी है, it's a reminder because हम कई बारी इतना प्रेशर डालते हैं बच्चे पे. I mean, I remember when my son was giving his 10th, तो हम जिस दिन उसका 10th का बोर्ड का एग्जाम था, उसके एक दिन पहले मैंने कहा करण हम मूवी देखने चलते हैं. तो my sons and all the people around me, जो हमारे neighbors, चाचा, मामा, बुआ, सबने मुझे बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, बोर्ड का एग्जाम है. इतना फियर हमारी सोसाइटी में है इस एग्जाम का, जिसका मतलब later in life it really doesn't matter. It's important that we work hard and we do well because वो हमारे लिए confident, we become confident. But इतना fear होता है कि बच्चे के जो mental illness जो एक बहुत बड़ा आजकल हो गया है, the role of counselors has become so big, is because of this pressure which we as parents don't realize. We are not realizing. अभी आप 12th तक तो उसको संभाल लेंगे, but after that वो आपकी सुनेगा नहीं सुनेगा, it is all dependent on you. What is the relationship you build with him? अपने बच्चों की strengths and weaknesses जानना बहुत जरूरी है. And there's a very beautiful book on parenting. I think every parent should read. You can only give them wings. I mean roots. Wings वो अपने आप ही कहाँ जाना है, क्या रास्ता है. Let them give them that confidence, the skills, the ability to decide what they want to do in life. हर पेरेंट चाहता है मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा करूं, पर कहीं ना कहीं हम अपनी lost dreams उनके ऊपर प्रेशर करते हैं, which leads to a lot of lack. What I want you to do is, firstly, don't look stressed because it's your child board exam. Relax, be comfortable,
talk to them a lot and keep telling them at least 6 times in a day, मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे. When we start talking that, even somebody was to tell me, I believe in you, I'm telling you, I will do much better in life, because वो अच्छा लगता है कि कोई मेरे पे, especially my father or my mother, मुझ पे believe करता है. You should know as a family, husband and wife, कि बच्चा किस पे ज़्यादा, किसका praise लाना चाहता है. Like, I'll give you a little example from my family. मेरी daughter के लिए getting praise from the father is more important than from me, because she thinks कि मैं तो हमेशा ही praise करती हूँ. तो जब father बोलते हैं तो वो she really values it. So it is a fact. So you should know that and give him that strength, that confidence, so that he's able to perform and do well. I am not going to take long. This was just a short session, because my only request is, I don't want any child of Jaipuria getting into depression, getting into some mental problem because of these pressure of board exams. And what is very important, there was some little bit which I must share. Now the emotional bit is over. Now as a school head, my request is that you must know the law as a parent. Kai parents ko nahi pata hota hai, so I will just go back to the video, to the screen. Can you see it, Chetna? Ma'am, visible. Yeah. Ma'am, it's visible. Every child is different, and किसी को आपके बच्चे के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पता है. And I think if your child feels you're interfering in their life at any point, just again and again I'm saying, be with them, let them grow, talk to them. हर बच्चा अच्छा करेगा. That is my thing. आप और मेरे को पता भी नहीं है किस तरह के jobs available हैं in the market. So let them do and let them get the confidence, let them work hard, for which they need your support. The day of the exam is very crucial, और उसके पहले भी बच्चे के साथ जरूर, मैं बार बार बोल रही हूँ, टाइम स्पेंड करिए, encourage करने के लिए. Give him a pat on his back. I think मुझे पता है तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा करोगे. उसको goal setting सिखाइए. Child will be very motivated. I think बहुत important है जब बच्चा पेपर करके वापस आता है and parents बैठ जाते हैं उसको scrutinize करने के लिए. This can have a negative impact. आपको बच्चे को बोलना है, क्योंकि sometimes we do well, sometimes we don't do well. Tell him, because वो next paper उसका अच्छा होना चाहिए, इसलिए बहुत important है. बच्चे को बोलिए. Even I'll request the teachers. You know, एक habit है हमारी कि हम पूछते हैं कैसा हुआ एग्जाम. जैसे ही बच्चा एग्जामिनेशन रूम से, how was your paper? अब बच्चे का अगर अच्छा नहीं हुआ, वो demotivate हो जाएगा next paper के लिए. So it's very important. Let's become above the others. Let's not ask. It's okay. We'll come to know how they have done. Let's encourage them. I know you must have done well. कोई बात नहीं, अब आप बंद करिए ये paper and study for the next one. Children feel very, I mean, I don't know how many of you have experienced, but I was in Wellams. I remember जब board exam होता था, सबसे एक तो parents का pressure, my parents were very chilled out. पर जब हम school जाते थे, तो वो सुबह सुबह जो एक हो जाता है शुरू, आदित्य, चेतना की तरह बहुत बच्चे थे, जो पूछते थे, जो पढ़ लिख के आते थे, आपने ये करा है, और उस समय इतनी नर्वसनेस होती थी कि जो मैंने याद भी करा होता था मैं वो भी भूल जाती थी. So I think it's very important, Chetna is smiling, sorry, that we need to not ask the child जब वो पेपर करके आ रहा है आपका कैसा हुआ है. It's just an advice. Rest of course depends on you. It's your child. I can't do anything much. Very important. Board exams are one of the most stressful times for an entire household. और जब जो जैसे इस वीडियो में दिखाया, जब आप एंग्शियस होते हैं, जब आप स्ट्रेस हो जाते हैं, यू पास ऑन दैट स्ट्रेस टू द चाइल्ड. आपका सेंटर है DPS इंदिरापुरम सीनियर विंग. वी वोंट बी रनिंग बसेस बिकॉज नॉट बिकॉज वी डोंट वांट टू, बट आई थिंक वो जो 10-15 मिनट आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे इन ड्रॉपिंग योर चाइल्ड एंड पिकिंग अप योर चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दैट. And proper uniform, I think ये सब तो आपको पता ही है, prohibited items. But what is most important in this is indulging in unfair means. And हर साल बहुत बच्चे पकड़े जाते हैं. I told you last year, और मैं बहुत candid हूँ, last year हमारे स्कूल से 2 बच्चे पकड़े गए थे, which was very embarrassing. You must know the CBSE rules, which you will get a circular also from us.
अगर बच्चा पकड़ा गया, for 2 years the child is banned from giving the exam. And it becomes a police case and it comes onto his file. It's not nice. Please talk to your children because ये बहुत easy route बच्चे सोचते हैं and I think आपसे हमसे ज़्यादा आप जानते हैं अपने बच्चे को और last time भी parent tried to protect the child, उन्होंने ये भूल गए कि अभी तो उसको बचा लेंगे पर वो बड़ा होके क्या करेगा. So please talk to your children if you have an inkling also कि they may use the unfair means, what they are taking in their this thing. कुछ लोग skirt में लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं. I don't know what all they do. I'm not aware, but it's a request that please ensure that your child doesn't carry anything and doesn't use anything which can be which can spoil his whole life, his or her whole life. This is my only request. I know you all are very busy. आपके पास बहुत ज़्यादा important काम है to go back and motivate your kids. My heartfelt best wishes to each and every child, and I'm very confident they will do well. Because मेरा wellness का मतलब है in life they will do very well. Board results इन लोगों के लिए बहुत important है, teachers के लिए and आपके लिए भी. And I'm sure, I'm confident अगर हम उनको encourage करेंगे, अगर कोई बच्चा teachers, you are also there. If somebody calls you up and is stressed out, please help them, talk to them, चाहे 12 बजे हो रात के. This is our job and this is our duty.